Recording has started. So now the topics are that is the president and his election, and you must have all done the homework for legislative. मैंने homework check नहीं किया, so I'm not sure किसने क्या किया. Legislative powers and functions, executive powers and functions, judicial powers and functions, administrative powers and functions, financial powers and functions, emergency powers and functions. ये topic इतना इतना important है कि तुम लोग जब 30 साल के भी हो जाओगे ना, तभी भी तुम लोगों को याद रहना चाहिए. Okay. And and any question can come on a single topic called what is the administrative power or what is the legislative power, or there can be 5 marks question, who is president, how he is elected, and give or tell about his functions. Okay, so you can have a question like that where you need to write all these functions. If you are writing only these 6 points also, legislative power, this power, this power, this 6 powers or functions, you will get at least 2.5 3 marks. And if you describe every one of them, then you will get 5 marks. Okay, everybody clear with this? I will come to Sadhna and Shiv Shankar to explain a bit what they understood. But before that, what else we will study is majority, that is simple, absolute, and special. Okay, and then the vice president, the prime minister, and council of ministers. ये कौन कौन से लोग होते हैं, ये कैसे इलेक्ट होते हैं, और what are their functions. Last would be the collective responsibility. सबसे पहले collective responsibility समझा देता हूँ, और उसके बाद we'll come to Shiv Shankar. So what is a collective responsibility means is, in general, ये आप लोगों के क्लास में सबकी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट यू डू द होमवर्क. Individual responsibility means every person should do their work by themselves. Okay, now this is where we say कि first of all we should grow ourselves. Second thing comes collective. Collective का मतलब होता है सबको साथ में रख के, taking everybody into consideration and then doing a stuff. If I say somebody had a problem, I told you that day maybe few of the students who did not come and few of the students who were absent during the our earlier classes. So I asked Mohit, Bhavna, and one more person to who was the third person? Preeti. That can you guys help that person, right? Help the other person. So when you are helping the other person or when you are taking a responsibility of the other person, that is called collective responsibility. Okay. If I say there are two people in your class whom I make the maybe the head or maybe the monitor, and I say it is your collective responsibility to make sure that everybody finishes their homework. उसका मतलब है हम सबका ध्यान रख रहे हैं, वो इंडिविजुअली सिर्फ अपना ध्यान नहीं रख रहा है. वो मॉनिटर सिर्फ ये नहीं देख रहा है कि he or she finishes their homework or job. उनीसा, अभी मेरे को आप सिर्फ मेरी तरफ सुनते हुए दिखने चाहिए, ठीक है? और भैया कहीं और वो कहीं एक पे लाइन हाँ उनीसा, आई वांट कि बस आप इधर सुनो. Everybody just have a concentration here. So collective responsibility is every government जो होती है ना, गवर्नमेंट में एग्जीक्यूटिव के लिए जो मैंने डिवीजन बताया था, स्पेशली जो सेंटर या यूनियन में एग्जीक्यूटिव का डिवीजन होता है, देयर आर 3 components मोस्ट इंपॉर्टेंट. वन इज प्राइम मिनिस्टर, वन इज द प्रेसिडेंट, एंड वन इज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या होते हैं? आप लोग पहले के जमाने के बारे में बोलता हूँ. पहले जब राजा महाराजा होते थे, उनके दरबार में कुछ बड़े बड़े मंत्री होते थे जो उनके दरबार में बैठने की जगह मिलती थी, जिनको जिनके राजा के साइड में जो चेयर्स होते थे ना, उन पे वो लोग बैठते थे. और जो सारी प्रजा होती थी और या उस दरबार में जो भी आता था, वो लोग सब नीचे बैठते थे या नीचे खड़े रहते थे, राइट? तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन फॉर द प्राइम मिनिस्टर. Prime Minister is the head of the country in terms of all the executive power. We have two head of the family. आप लोग के घर में भी there will be two head of the family. Maybe father is your head of the family as well. Mother is also the head of the family. पर father जो है वो ज्यादा powerful होगा because in terms of monetary help, in terms of decision making. ठीक है? Whereas mother is also a head. Sometimes if father is not there, you can take the signature from your mother, or you can say ki mom I need this much of money, mom I need to go outside, so you can take a permission. Okay, so similarly in India,
President and Prime Minister both are head of the state. President is head of the state in a very descriptive way. मतलब उसके पास ज्यादा powers नहीं है, पर he can give the signature for the time being. He can say कि okay मेरे नाम पे बोल दो, प्रेसिडेंट ने बोला है कि ऐसा होना चाहिए, प्रेसिडेंट ने बोला है कि वैसा होना चाहिए. कल को आपको पकड़ लिया किसी ने, तुम बाहर खेलने कैसे आए, या फिर तुम क्लास वाले दिन में तुम क्लास में कैसे नहीं आए, एंड यू आर समवेयर आउटसाइड, यू आर लाइक मैंने मम्मी से परमिशन लिया. as soon as you say that मैंने मम्मी से परमिशन लिया, तुमको फिर भी बोलते हैं चलो ठीक है, if your parents know. Not necessarily कि पापा से परमिशन लेना is important. Okay, so when you are executing, when you are doing some kind of activity, कल को तुम्हारे घर में पुलिस आ गई, कल को आर्मी वाले लोगों ने कुछ किया, they can say we have the permission from the president, we have a signed authority from the president. So president has the authority to give the signatures. But when it comes to taking all the important decisions of a country, that head of the country is prime minister. He's the most powerful person in terms of executive. Unisa, right now no questions, I'll come back. Keep the question or write it in your copy. So most powerful is prime minister, but president is also powerful in certain ways of giving signature and giving the permissions. Okay, itna sabko clear hai? Okay, now is prime minister one person? One person cannot run the show or cannot rule or cannot govern the entire country. So he will have council of ministers. I told you council of ministers are the most important ministers of the house, who will be given different portfolios. अब से मैं ये नहीं बोलूंगा कि they are being given different sectors. Portfolios means different sectors like water, electricity, or maybe the finance, or maybe the defense. So from now on, I will say the word portfolio. When you are also talking, you should say the word portfolio. Okay. So the prime minister provides portfolios to his council of ministers. Now this council of minister and the prime minister, they have the collective responsibility of running the country in a better way, in governing the country in a better way. ठीक है? So what collective responsibility means? अगर किसी पॉइंट पे जाके there is a question कि बजट अच्छा पास नहीं हुआ, budget is not good for this year, or maybe there is a question like during COVID we did not do well in terms of medical facilities, or maybe there is Olympics in which India did not play well. You will not put a question just ki our prime minister is not good. We will say prime minister and the council of minister. It's like both will be taken the name together. They have not performed well. It's not like agar India cricket mein acha nahi khel raha, it's like Dhoni acha nahi khela. They will say the entire team has not played well. So prime minister and council of minister is the team who is running the show. Is everybody clear with that? So whenever a government fails or whenever a government passes, how the government fails, हम मैंने आप लोगों को बोला था कि गवर्नमेंट के पास मेजोरिटी होती है, अभी जैसे बीजेपी हैज द मेजोरिटी, बट सडनली द पीपल इन द हाउस हु हैज वोटेड फॉर वन पर्सन, एवरीबडी वोटेड, बीजेपी में जितने भी लोग एमपीज है, ओके, उन एमपी ने वोट किया कि प्राइम मिनिस्टर इज द हेड. प्राइम मिनिस्टर कौन है? नरेंद्र मोदी. तो हमें लगता है कि नरेंद्र मोदी हम शुड बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ वो कंट्री. सडनली बीजेपी के आधे लोगों को लगा कि प्रधानमंत्री अच्छा काम नहीं कर रहा है, ठीक है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं होना चाहिए, अमित शाह होना चाहिए, लेट्स से उनको ऐसा लगता है. तो एज सून एज वो लोग अपना वोट खींच लेंगे या मेजोरिटी ले लेंगे कि नाउ वी आर नॉट गिविंग मेजोरिटी टू नरेंद्र मोदी, व्हाट विल हैपन, सिर्फ नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन से नहीं हटेगा, नरेंद्र मोदी प्लस द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, एवरीबडी विल लूज देयर पोजीशन. डिड यू अंडरस्टैंड? इफ आई डोंट हैव फेथ और ट्रस्ट ऑन द गवर्नमेंट, वन पर्सन विल नॉट गो. इंडिया की टीम में क्या होता है? इंडिया की टीम में अगर किसी को लगा कि कैप्टन सही नहीं है तो सिर्फ कैप्टन चेंज होता है, राइट? अदर प्लेयर्स स्टिल स्टे. पर गवर्नमेंट में ऐसा नहीं होता है. गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आर अ टीम. इफ द प्राइम मिनिस्टर इज चेंजिंग, एवरीबडी इज चेंजिंग. व्हाई? क्योंकि जो इलेक्शन प्रोसीजर है, प्रोसीजर में ये होता है कि लोगों ने एक पार्टी को
सबसे ज्यादा वोट दिया, लेट्स से बीजेपी, हम लोगों ने वोट किया फॉर लोकसभा, एंड देन हमने ज्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसी में बीजेपी को सिलेक्ट करवाया। अब बीजेपी के पास जब मेजोरिटी थी, प्रेसिडेंट ने बोला बीजेपी के लोग, आप लोग बताओ कि आप अपना लीडर किसे बनाना चाहते हो। तो सबने बोला हम नरेंद्र मोदी को बनाना चाहते हैं, तो दे मेड नरेंद्र मोदी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। After that, this Prime Minister of India selects out of these 270, 280 people, 15 or 20 people as the Council of Minister. So Prime Minister brings these people as Council of Minister. तो जब प्राइम मिनिस्टर लेके आया इन 15 लोगों को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किया, मैंने अमित शाह को होम मिनिस्ट्री दी, मैंने डिफेंस के लिए किसी को दिया, मैंने फाइनेंस के लिए सीता रमन को दिया। तो अगर आई एम गिविंग लाइक दिस, so when the prime minister is not good, I cannot trust the people he has brought, right? When I'm saying ki prime minister is not faithful, the people he has brought, I don't have trust in him. So that's why it's the collective responsibility if the government fails or if the government is doing good. If the government fails and I lose the faith in the government, only prime minister will not go. The entire council of minister will go. Again, president will ask whom you want to select the leader. Let's say they say Amit Shah. Now Amit Shah will come and now he will choose his 15 people. That can be the same 15 people or the different. That's a different thing altogether. But he can choose a different team altogether. So it's how I'm saying right now. If in terms of government, if India has a cricket team, अगर धोनी कैप्टन है, धोनी आने के बाद वो अपने 11 प्लेयर सिलेक्ट करेगा। जैसे ही सबने बोला, कमिटी ने बोला कि हमें धोनी पे भरोसा नहीं है, धोनी इज नॉट डूइंग गुड, लेट्स चेंज द कैप्टन, तो उसके जो 11 प्लेयर थे वो भी बाहर चले जाएंगे। अब फिर से जो नया कैप्टन आएगा, फिर वो अपने 11 प्लेयर सिलेक्ट करेगा। इज एवरीबडी क्लियर विद द प्रोसीजर? So this is how the council of ministers are selected. So whenever we say it is the collective responsibility of the government, it means it's the collective responsibility का मतलब होता है कि प्राइम मिनिस्टर प्लस द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उन सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट दे हैव फेल्ड। जब हमने बोला कि वी आर नॉट, द बजट इज नॉट गुड, सो इट इज लाइक द एंटायर council of minister. That's when we say the collective responsibility. Second thing is majority. I have taught you this. Majority are of three types generally. One is simple majority, second is absolute majority, and third is special majority. ये सारे जो प्रोसेस होते हैं ना, जो मैंने आपको बोला, सिलेक्शन प्रोसीजर, या फिर प्रेसिडेंट ने बोला कि तुम अपना प्राइम मिनिस्टर किसे सिलेक्ट कर, लीडर किसे सिलेक्ट करना चाहते हो, सब में वोटिंग होती है। हर चीज वोटिंग से होती है। इंडिया में कुछ भी ऐसे नहीं होता कि मैंने उठ के बोल दिया कि ये इस बंदे को प्रेसिडेंट बना दो या इस बंदे को प्राइम मिनिस्टर बना दो। नो, इट डज नॉट वर्क लाइक दैट। एवरीथिंग गोज थ्रू वोटिंग। वी इलेक्टेड द लोकसभा members, Loksabha members elected the prime minister, then the prime minister and other people will select the new president, then prime minister and other people will select the vice president. Everything goes through voting. Okay, and nothing is like a direct procedure. Either there is direct voting by us or there is indirect voting by the representatives which we have selected. Okay, there are only two kind of elections in India. Either a direct voting by the people of India. I want you to listen this part of the video when I upload it. I want you to say this word and write this word in terms of explanation. Okay, when you are writing it down in your answer, whenever you say direct election, direct voting, it means the people of India are selecting. Whenever we say indirect election, then the representatives of India which we have selected, they will vote. Representatives कौन होते हैं? MLAs and MPs, जो लोकसभा राज्यसभा में बैठते हैं और जो लेजिस्लेटिव असेंबली लेजिस्लेटिव काउंसिल में बैठते हैं। ओके, सो द प्रेसिडेंट is also being elected by the indirect representatives of India. उसमें कौन वोट करता है? उसमें वोट करता है लोकसभा, राज्यसभा and all the legislative assembly and council of the country. उन सब का वोटिंग लेने के बाद whosoever wins, that becomes the president of India. Okay, yeah, tell Mohit. Yeah, like right now working on. Can you just repeat it? Yeah, that I'll repeat. उससे पहले उनीसा का क्वेश्चन सुन लेते हैं। उनीसा, you were asking some question. So you were explaining something like president, prime minister is there. So like you gave mother father example,
mother and father example now. Like that same example I was having. Like our principal ma'am and teachers, if we are going out, so it is not necessary. Council of Ministers का example है. So it is not necessary to. We should ask principal ma'am only to go outside. So we can ask teachers also. Okay, okay, I got it. अब मोहित बोलने दो उसे. भैया अंदर के भैया उसको बोलने से. हाँ, सो उनीसा यू आर करेक्ट, पर यहाँ पे मैं सिर्फ दो लोगों की बात कर रहा हूँ. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट टीचर एंड प्रिंसिपल. जस्ट थिंक, देयर आर टू हेड्स ऑफ द फैमिली, देयर आर टू हेड्स ऑफ द कंट्री, दैट्स इट, नॉट मोर देन दैट. यहाँ पे हम बात करें मम्मी पापा दो लोग, उसके बाद तुम्हारे चाचा ने ताऊ ने क्या बोला, उनसे भी हो सकता, दैट्स देयर. But for now, the topmost position pe is your mother and father. Father has all the powers, execution as well, whereas the mother has signing power कि हाँ मेरे से permission ली थी या लिया था. That's it. Okay. Similarly, in India, the prime minister has maximum powers. President also has some kind of legislative powers where he can sign and he can give his permission that I have given. But he cannot execute. Execute का मतलब है वो actions नहीं ले सकता है. Prime minister can take actions. Okay. हाँ, now Mohit, which you were telling, मुझे repeat क्या करना है एक बार फिर से बताना. भैया आप लास्ट में शायद बोल रहे थे ना कि प्रेसिडेंट कैसा, लाइक प्रेसिडेंट कैसा Now था. selection. Okay, हाँ. The selection procedure or the election procedure, how it works is, सबसे पहले हर किसी को पता है ना प्राइम मिनिस्टर कैसे इलेक्ट होता है. एटलीस्ट एवरीबडी नोज हाउ प्राइम मिनिस्टर गेट्स इलेक्टेड. ओके, नाउ आफ्टर प्राइम मिनिस्टर देयर आर टू मैंने क्या बोला, तीन ही पार्ट है एग्जीक्यूटिव के इंडिया में. ऑन टॉप, ऑन टॉप, वन इज प्राइम मिनिस्टर, वन इज प्रेसिडेंट एंड वन इज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. प्रेसिडेंट के साथ वाइस प्रेसिडेंट भी जोड़ लो, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. ओके, सो आई एम टेलिंग यू, प्राइम मिनिस्टर तुम लोगों को पता है, श्रीशैल. प्राइम मिनिस्टर तुम लोगों को पता है. आई एम टेलिंग यू अबाउट प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट. हाउ प्रेसिडेंट गेट्स इलेक्टेड, you know he is not getting elected directly, he is getting indirectly by the representatives of India. तो जो लोकसभा एंड राज्यसभा के मेंबर्स हैं, दोज पीपल, प्लस हर स्टेट असेंबली में जो लेजिस्लेटिव असेंबली एंड काउंसिल के लोग हैं, ये सब वोट करते हैं. ये सब लोग वोट करते हैं. एंटायर इंडिया में 28 स्टेट्स आर देयर, 28 स्टेट्स के लेजिस्लेटिव असेंबली एंड काउंसिल. लेजिस्लेटिव काउंसिल सिर्फ 6 ही स्टेट्स के हैं, ठीक है, एंड 28 स्टेट्स के लेजिस्लेटिव असेंबली है. तो these 34 houses प्लस लोकसभा प्लस राज्यसभा, एवरीबडी वोट्स. उसमें से मेजोरिटी जिस इंसान को मिलता है, ही बिकम्स द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. ओके, अभी हाथ नीचे एक सेकंड. वेयर एज फॉर वाइस प्रेसिडेंट, इट्स जस्ट द राज्यसभा एंड लोकसभा वोट्स, not the state assemblies votes. Okay, only Rajya Sabha, Lok Sabha votes, and they select the vice president of India. So president gets elected by union houses plus state houses, union legislature plus state legislature, whereas vice president is elected only by the union legislature. Everybody clear with this? Okay, Mohit or Shiv Shankar, what question you have? Jaldi jaldi jaldi. Yeah, I was asking that when the prime minister will be getting elected, at that time the union legislature and the state legislature will be voting them. Who will be the and Lok Sabha and Rajya Sabha, they all will, whoever can be standing from the any state. I mean, if he is from Lok Sabha, then he can stand. Anybody can stand. They have few criteria that you check. What are the criteria? Eligibility वो आपके book में लिखा हुआ है. Anybody above the age of 30, she should be member of the Lok Sabha or Rajya Sabha. Something is there. Okay, that is criteria. If you fulfill that, anybody in India can stand. There is nothing like कि आपको BA पास होना है या आपको BTech पास होना है या आप लोगों को कांच काटना आना चाहिए. There is no professional skill that is needed. Anybody can stand. Okay, so भैया आप तो बोले थे ना कि प्रेसिडेंट शुड बी एजुकेटेड. that's what everybody makes sure. When somebody is selecting president is such an important position, they make sure ki he is an president as well as the Rajya Sabha members. Everybody makes sure whosoever they are sending, because it is such an important and responsible job. That's why they make sure कि कोई देखो भेजने को तो they can send somebody who is illiterate or who cannot study,
But if you are sending your president outside India and you cannot talk in English, it's a problem, right? So that's why Yes. they make sure whomsoever they are selecting, they are very educated and they are very skillful in terms of knowledgeable person. Agar tumne let's say, just giving an example, it's not a disrespect to anybody, if there is any XYZ MP who is not studying, or who is not very literate, and who is not very respectful, maybe उनके ऊपर criminal charges है, ओके उनके ऊपर सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स है, या उनके ऊपर ऐसा है कि पीपल डज नॉट रिस्पेक्ट हिम, नाउ इफ ही गोज आउटसाइड इंडिया एंड ही becomes the president of India, he goes outside and meet different people, they will not respect him because he has criminal charges. But at the same time, if you are sending APJ Abdul Kalam, or you are sending somebody like right now we have what's हाँ, अरे मैं हर बार नाम भूल जाता हूँ, Ramnath. Ramnath Ramnath. Kovind. Ramnath Kovind, whenever they go out, they are being respected. Okay. Why they are being respected? Because they are very clean. First of all, they are not the people who has any kind of criminal charges. Second of all, they are very educated and very informative. So same with Rajya Sabha. They make sure that. Okay. So now, I told you the select. हाँ, हमारा क्वेश्चन बोला तो इसीलिए it's not necessary. नहीं भैया, वो तो आप शिक्षक को एक्सप्लेन कर रहे थे ना, आप बोले ही कैन बी एजुकेटेड और ही कैन नॉट, सो आई आस्क्ड। तो भैया भैया, फिर हम Prime Minister Okay, Mohit, jaldi, 1 minute and your question. I am losing time. Hmm. भैया, इन स्टेट लेजिस्लेचर all the states will be not having legislative council now, so हाँ, only 6 have legislative council, yeah. so they will also vote for president. Yes. For president, every state legislatures, legislative assembly and council will vote, whereas for vice president, only Lok Sabha, Rajya Sabha votes. Okay, chalo. Now the next part is, this is the election, and every election which is direct or indirect, there is majority. हमने majority तो बात हर बारी करी है ना कि we need to have a majority. When you are passing a bill, when you are passing a amendment, a constitutional amendment bill, and as well as when I'm going for the impeachment, अगर मैं किसी दिन president के लिए prime minister ने बोला I feel that this guy is not working properly, or this guy is not working according to me, why president is not that powerful is, prime minister can ask, put a question on the president any day, that he is not listening me or my council of ministers activities. सो इन कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट को थोड़े कम पावर्स इसलिए दिए गए हैं कि ना, in the constitution we have written that president should work according to the prime minister and the council of minister. प्रेसिडेंट और सबसे तो ऊपर है, सिटीजन बोलो या फिर द लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली या लोकसभा के दूसरे मेंबर से, पर जो प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, दे आर वेरी पावरफुल एज कंपेयर टू प्रेसिडेंट. तो अगर कल को प्राइम मिनिस्टर सेड कि यू शुड डू दिस, और प्राइम मिनिस्टर सेड कि you just announce an emergency for country of India, and he is not doing it, or he feels that it's not right, then he can be impeached, because prime minister and council of ministers can say that he is not working according to us. So president has always, or always need to listen to the prime minister or work with them. Then he cannot work against the prime minister or the council of minister. That's why president is not as powerful as prime minister. Okay. So now during impeachment also, prime minister ये बोल सकता है कि this person is not working correctly, but he cannot remove him. He can just say that this person is not doing the job properly. After that also there will be a voting in the Lok Sabha and the Rajya Sabha. Okay. And there we need majority. If the majority is not in support of prime minister, then that person will not be removed. That happens for president, vice president, as well as the Supreme Court judges, Supreme Court and High Court judges. Okay, so majority is needed everywhere, but we have defined majority also in three types. Those are simple majority, absolute majority, and special majority. Some people who are very powerful, like the Supreme Court judge or president, these guys should not be removed just by simple majority. क्योंकि अगर तुमने simple majority का concept सुना है, so the Lok Sabha has simple majority से ज्यादा लोग, that's why prime minister बीजेपी का बना, right now इसका मतलब है कि 50 से ज्यादा लोग, 50% से ज्यादा लोग लोकसभा में बीजेपी के हैं. अगर मैं सिंपल मेजोरिटी बोलता हूँ, कल को नरेंद्र मोदी ने बोला कि अपने बीजेपी के सारे लोगों की नहीं, तो हम ना
सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाएंगे, या फिर हम इसको हटा देंगे, सोच लो हम प्रेसिडेंट को हटा देंगे. सो इन दैट केस only BJP by their power can remove them, right? That's why in that case we need special majority. That means we need two-thirds of the members of the Lok Sabha. Then only that person will be removed. It's not 50%, it's 66.7%. Okay. So there are three kind of majority. I'm explaining those three majority for now. One is simple majority. Simple majority means number of members or a number of people who are voting, who are present, उसमें से 50% से ज्यादा. आप लोग की क्लास में 26 बच्चे हैं. Let's say there are 26 students. Simple majority does not mean 13 plus. Simple majority does not mean 14 votes. Simple majority means आज के दिन में तुम्हारी क्लास में कितने बच्चे आए हैं? तुम्हारी क्लास में 20 बच्चे आए हैं, तो सिंपल मेजोरिटी का मतलब होगा कि 10 से ज्यादा अगर मेरे को वोट मिल गए तो मैं जीत गया. Okay, simple majority means number of people who are present 50% above that. Everybody clear? Absolute majority is, second one is absolute majority. Absolute majority is 26 people are there. तुम्हारी क्लास में 26 बच्चे हैं, आज के दिन में 20 आए हैं, ठीक है, पर तभी भी मेरे को 13 प्लस वोट चाहिए. जो लोग नहीं आए मैं उनको कंसिडर नहीं कर रहा है, पर अगर मेरे को 13 प्लस वोट नहीं मिले, आई विल नॉट हैव एब्सोल्यूट मेजोरिटी. ओके, चाहे कल को तुम्हारी क्लास में 14 ही बच्चे आए हो, और अगर मैं सेशन कर रहा हूँ पार्लियामेंट का, एब्सोल्यूट मेजोरिटी मींस मुझे फिर 14 के 14 का वोट चाहिए. अगर मेरे को 13 का भी मिला तो मेरे को मेजोरिटी नहीं मिली. आर यू गाइस क्लियर? सो whenever I talk about absolute majority, there are 543 seats in Lok Sabha. उसके उस दिन में अगर लोकसभा में 400 people भी present है, then also I need 274 votes. अगर मेरे को 274 votes से कम मिला, I will never have absolute majority. Whereas for simple majority, अगर 400 लोग हैं, मुझे 200 से ज्यादा वोट मिलते हैं, तो I will have simple majority. Everybody clear with this too? And then there is something called special majority. Special majority is where you will have more than two-thirds of the existing member. ये नहीं कि जो प्रेजेंट है, जो एग्जिस्टिंग मेंबर है उनका 2/3 वोट से ज्यादा होना. ओके, दिस इज कॉल्ड सिंपल मेजोरिटी. एंड देन देयर इज वन मोर मेजोरिटी जिसे कहते हैं विच वी डू ओनली फॉर कैब. कैब हियर है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल. हमने बहुत पहले से बोला हुआ है कि जो बुक हमारे फोर फादर्स एंड द पीपल हु हैज रिटन द कॉन्स्टिट्यूशन, द फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन B.R. Ambedkar has written, they have written after considering, discussing with many people. Then they have read and they have learned the constitution of different countries. They have learned the UK constitution, they have learned the US constitution, Irish constitution, Russian constitution. उन्होंने जो बुक बनाई है उसको उन्होंने बहुत रिसर्च के बाद बनाया. तो उसको अगर कोई अचानक से कोई नया बंदा आके, हम 15 साल से रूल कर रहे हैं, लेट्स से हम अगर सडनली उसे चेंज कर दे, दैट इज नॉट अलाउड. दैट्स व्हाई चेंजिंग द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ वेरी टफ टास्क. It's not that just that you want to change a constitution, you can change it. Okay, so in that case, a constitution amendment bill, if you are trying to change something, first of all, you need to have special majority in the union house. That is, in Lok Sabha and Rajya Sabha, you need to have special majority. Two-thirds of the people should vote it. After that, in the state legislature, everybody should pass by simple majority. सबसे पहले वो बिल जो है, अगर मैंने एक अमेंडमेंट बिल बोला कि कल से फंडामेंटल राइट्स लोगों को नहीं देने, आई एम ट्राइंग टू चेंज दैट. ओके, चलो वो तो मतलब कंप्लीटली अनटचेबल है, पर मैं ये बोल रहा हूँ कि फंडामेंटल राइट में से एक राइट है कि राइट टू एक्सप्रेशन अब से खत्म करना है. तो राइट टू एक्सप्रेशन जब खत्म करना है, मैंने आके प्रपोज किया राज्यसभा या लोकसभा में, तो राज्यसभा के लोगों ने पास कर दिया, लोकसभा के लोगों ने पास कर दिया, तभी भी मतलब स्पेशल मेजोरिटी के साथ पास कर दिया, 2/3 पॉपुलेशन, तभी भी यू विल नॉट हैव द बिल पास्ड. उसके बाद क्या होगा, इट विल गो टू द स्टेट लेजिस्लेचर. अगर 28 स्टेट्स है, उन सब में स्टेट लेवल पे बोला जाएगा कि लोगों को राइट टू एक्सप्रेशन नहीं देना. उसमें से अगर 14 स्टेट्स या उससे ज्यादा ने सिंपल मेजोरिटी से पास किया, तभी वो पास होगा. अगर 14 से कम में हुआ तो वो बिल नहीं पास होगा.
Just because union want it or central want it, it will not change. Did you understand? Three majorities are normal, except that this is special का भी एक different case, in which is actually applicable for constitutional amendment bills. Okay. Yeah, Mohit and Shiv Shankar. Question. कुछ पूछना था? Yeah, you just now told that if we want to remove a fundamental right, हाँ. then if the system, Lok Sabha and Rajya Sabha both, then it will go to state legislature. Yes. But we have only constitutional amendment will go to state legislature, or all the bills will go. All the bills will not go. Constitutional amendment bills, and there are few bills which are related to the states. Only those will. I'll tell about those bills. But constitutional amendment bill will go for sure. Okay, except that there are few specific bills like Cooperative Society of India. That is one topic which is state specific. मैंने तुम लोग को एक वो बनाया था, ड्राइंग बना के दिया था, जिसमें था स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, एंड देयर इज ए कॉनकरेंट लिस्ट. कॉनकरेंट लिस्ट आर दोस कॉमन टॉपिक्स जिसपे अगर ये कुछ चेंज करते हैं, that has to be passed by the state as well. It cannot just be done by union. Whatever are there in concurrent, उसका मतलब है वो स्टेट को और यूनियन को दोनों को इम्पैक्ट करता है, तो वो अकेले डिसीजन नहीं ले सकते. ओके. And we have in money bill also you have told that it should first introduced in Lok Sabha. Yes. So after the process of Lok Sabha and Rajya Sabha, it will go to state legislature also. if we are talking about state specifically, तो वो state को जाएगा. अगर वो state का specific नहीं है, ठीक है, अगर वो जैसे कोविड का था, that will go to states as well. But then there are some money bills, like I am saying कि we will pass it to railway. Railway is not a state topic. Railway is controlled by union government, तो वो वाला topic नहीं जाएगा. But we are saying we will give it to government educational institution. वो government education institution is a state level thing, so state में जाएगा. कुछ कुछ चीजें यूनियन हैंडल करती है, उसमें स्टेट का कोई कंट्रोल नहीं है. जैसे कि वन थिंग इज द आईएएस ऑफिसर्स. ओके. सेकंड थिंग द रेलवे. थर्ड थिंग द डिफेंस ऑफ इंडिया. These are controlled by the state union government. These topics are not given to the state. तो इंडिया का डिफेंस आर्मी कल को अगर कोई बोल रहा है, केरला का मिनिस्टर बोल रहा है कि इंडिया प्राइम मिनिस्टर गलत कर रहा है हमारे साथ, पर तभी भी इंडिया का डिफेंस या इंडिया का आर्मी सिर्फ और सिर्फ यूनियन की बात सुनेगा, वो स्टेट की बात नहीं सुनेगा. अंडरस्टूड? सो देयर आर फ्यू टॉपिक्स. रेलवे इज आल्सो अ टॉपिक व्हिच कम्स अंडर यूनियन. ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स जो उनके अंडर आते हैं वो वाले स्टेट में नहीं जाएंगे, पर फ्यू टॉपिक्स लाइक एजुकेशन, देन फैक्ट्रीज एंड ऑल, दोज आर बोथ यूनियन एंड स्टेट, वो वाले जाएंगे. ओके. वो ज्यादा डिस्क्रिप्शन में यू मे अंडरस्टैंड इन द नेक्स्ट क्लास एज इन 10th class. I'll explain those things. For now, what you understand is this much. Okay. Now the last thing, 10 बज गए, but I'll explain this last thing and then you guys can go. That is, I told about the Council of Ministers. Shiv Shankar abhi nahi. I'll take that question later. Okay. That is Council of Minister. Who are the Council of Ministers? I told they are the people who are being selected by the Prime Minister. Okay. So Prime Minister said ki these are my 15 important people whom I will give the defense, whom I will give the finance, whom I will give in these different portfolios. Now, in this, there are three kind of Council of Ministers. One, जो मैंने 15 लोग सिलेक्ट किए ना, उसमें से भी मैं 5 सबसे इंपॉर्टेंट सिलेक्ट करूं. उस 15 में से भी सबसे 5 जो मेरे सबसे क्लोज सर्कल में होंगे और जो डिसीजन लेंगे, उनको कहते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स. Okay, the closest to the prime minister are the cabinet ministers. So there are three kind of council of minister. One is cabinet minister, second is state minister, and third is deputy minister. Again, I'm telling there are three types of council of ministers. One is the cabinet minister, one is the state ministers, and one is the deputy ministers. Okay, so now cabinet ministers are the most important topics which are being given in the Indian constitution or Indian government, which I told you right now are defense, finance, then home ministry, and there are few more, like 5, 10 are there. These are the most important and they are called the cabinet ministers of India. Like education minister, health minister, these all come under the cabinet ministers. Okay, so
आउट ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अगर प्राइम मिनिस्टर ने 30 लोग सिलेक्ट किए, उन 30 में से भी वो 5 या 10 को सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन देता है, दोज आर कॉल्ड कैबिनेट मिनिस्टर. सेकंड इज कॉल्ड मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स. मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स जो होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि इट्स ऑफ ए स्पेसिफिक स्टेट ऑफ अ केरला एंड ऑल. दीज आर द टॉपिक्स विच आर इंपॉर्टेंट, पर ये हर स्टेट में अवेलेबल नहीं है. कहीं किसी स्टेट में अवेलेबल है, किसी स्टेट में नहीं अवेलेबल. ठीक है, दे आर कॉल्ड मिनिस्टर ऑफ स्टेट. तो ये इंडिविजुअल लेवल पे काम करते हैं. आई विल एक्सप्लेन मोर अबाउट मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द नेक्स्ट क्लासेस आफ्टर द टेस्ट ऑन मंडे. ओके, बट फॉर नाउ यू जस्ट अंडरस्टैंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स वर्क इंडिविजुअली. थर्ड वन आर कॉल्ड डेप्यूटी मिनिस्टर्स. जो मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि ये लोग रिसर्च करना होता है. लोकसभा के लोगों का काम क्या होता है? दे गो एंड दे डू द रिसर्च. सो दीज डेप्यूटी मिनिस्टर्स हेल्प द कैबिनेट मिनिस्टर. सोच लो कैबिनेट मिनिस्टर इज एजुकेशन मिनिस्टर है हमारे. तो एजुकेशन मिनिस्टर ने बोला कि तेलंगाना में और आंध्रा में पढ़ाई अच्छी नहीं हो रही है, स्कूल के कंडीशंस अच्छे नहीं है. सो दिस कैबिनेट मिनिस्टर विल टेल टू द डेप्यूटी मिनिस्टर. So there one will be a education minister of India who will be a cabinet minister. Then there will be a deputy education minister. Okay, that deputy education minister is not a cabinet minister. तो वो वाला बंदा क्या करेगा? वो जाके अब रिसर्च करेगा. He will make committee and he will do the research, and then he will come with a plan and he will come with all the data. So they are called deputy ministers. So अगर आप हियरार्की में देखो, सबसे स्ट्रांग होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में, कैबिनेट मिनिस्टर आर द स्ट्रॉन्गेस्ट. उसके बाद होते हैं स्टेट मिनिस्टर्स, और उसके बाद होते हैं डेप्यूटी मिनिस्टर्स. ओके, एवरीबॉडी क्लियर विद दिस? I had to explain you one more thing which I forgot, and in term of that, civil servants or the IAS people, they are also the people who come under executive, क्योंकि वो एग्जीक्यूशन करते हैं. जो भी मैं रूल बनाता हूँ वो उन लोगों को आगे बढ़ाते हैं, आगे लेके जाके जाते हैं. तो but this IAS officers who are being selected by a competitive exam, they are controlled by the union minister. That is the union. State has no control on it. कल को मैंने बोला कि XYZ पर्सन, क्या कहते हैं, श्री शैल अब IAS है, और मैंने इसको बोला कि तुम जाके राजस्थान में काम करो. अगर वो राजस्थान में काम कर रहा है, मतलब राजस्थान का स्टेट मिनिस्टर उसको कुछ नहीं कर सकता. अगर राजस्थान के स्टेट मिनिस्टर ने, मैंने जाके बोला कि तुम जाके वहां के 5 स्कूल और 5 विलेजेस को बेटर करो, वहां पे जाके इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर की कंडीशंस को बेटर करो. ही इज वर्किंग ऑन दैट. एंड नाउ वो राजस्थान का चीफ मिनिस्टर और राजस्थान का कोई मिनिस्टर आके बोले कि तुम किसी और स्टेट में जाओ, इट इज नॉट पॉसिबल. Only the union minister can move them. State has no control on it. Okay, there is less than 1 minute. Thank you for the class. Bye. And I will tell you the homework. I'll send it. And after that, I'll explain a bit about it. अभी के लिए जितना पढ़ा है, 5th chapter and 4th chapter will come as test on Monday. Okay. Chalo. Thanks and bye. And Shiv Shankar, you can send me the question which you had. Okay. Chalo. Thank you. Bye. बाय. Bye.